हिंदू मैरिज एक्ट धारा 24 और CrPC 125, BNSS धारा 144 के बीच अंतर। हिंदू मैरिज एक्ट धारा 24, CrPC धारा 125, अब BNSS धारा 144 लागू होने वाला कानून। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 वैयक्तिक कानून सिर्फ हिंदुओं पर या स्पेशल मैरिज एक्ट में दंड प्रक्रिया संहिता BNSS धर्मनिरपेक्ष कानून सभी धर्मों पर लागू। कौन दावा कर सकता है? सिर्फ पति या पत्नी कोई भी, लेकिन तलाक विवाह संबंधी केस चल रहा हो। पत्नी, नाबालिग बच्चा वैध या अवैध, विकलांग वयस्क बच्चा, असमर्थ माता पिता। उद्देश्य केस चलने तक अंतरिम भरण पोषण प्लस मुकदमा खर्च। मुखमरी रोकने के लिए स्थायी भरण पोषण। तलाक का केस चलना जरूरी नहीं। स्वरूप सिविल प्रकृति का अंतरिम पेंडेंट लाइट आपराधिक प्रक्रिया लेकिन राहत सिविल। मासिक या स्थायी। कब दायर कर सकते हैं? मुख्य हिंदू मैरिज एक्ट केस तलाक आदि के साथ या उसके दौरान ही। स्वतंत्र रूप से कभी भी कोई दूसरा केस जरूरी नहीं। राशि आमतौर पर ज़्यादा होती है। जीवन स्तर, दोनों की आय आदि देखी जाती है। उचित राशि भिखारी बनने से बचाने के लिए। आमतौर पर कम वसूली का तरीका। सिविल डिग्री की तरह संपत्ति कुर्की आदि तेज वसूली। वारंट 1 महीने तक जेल भी हो सकती है। अंतरिम भरण पोषण मिल सकता है? हाँ, यदि धारा अंतरिम के लिए है। हाँ, 2001 संशोधन से BNSS में भी है। क्या पति पत्नी से ले सकता है? हाँ, अगर उसकी खुद की आय नहीं है। नहीं, सिर्फ पत्नी, बच्चे, माता पिता ही ले सकते हैं। समय सीमा मुख्य केस खत्म होने तक ही, कोई समय सीमा नहीं। जब तक उपेक्षा जारी है तब तक दावा कर सकते हैं। कोर्ट फैमिली कोर्ट, जिला जज वही कोर्ट जहां मुख्य केस। प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट आपराधिक कोर्ट। एक लाइन में सारांश। हिंदू मैरिज एक्ट धारा 24 तलाक विवाह केस चलते समय पति या पत्नी को अंतरिम भरण पोषण प्लस मुकदमा खर्च। CrPC 125, BNSS 144 किसी भी धर्म की पत्नी, बच्चे, माता पिता को भूखमरी से बचाने के लिए भरण पोषण। तलाक का केस जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले। केस का नाम और उद्धरण साल। मुख्य बात अंतर के संबंध में। कैप्टन रमेश चंद्र कौशल बनाम बिना कौशल AIR 1978। सुप्रीम कोर्ट 18-7। सुप्रीम कोर्ट 1807 1978। हिंदू मैरिज एक्ट 24 केवल अंतरिम है, केस चलने तक। CrPC 125 स्वतंत्र और भीखमरी रोकने के लिए। भगवान दत्त बनाम कमला देवी 1975-2। सुप्रीम कोर्ट केसेस 386 1975। CrPC 125 में पत्नी की कमाई होने पर भी भरण पोषण मिल सकता है अगर वो खुद को ठीक से नहीं चला पा रहा हो। चतुर्भुज बनाम सीताबाई 2008-2। सुप्रीम कोर्ट केसेस 316 2008। CrPC 125 सभी धर्मों पर लागू। बिना तलाक केस के भी चल सकता है। राजनेश बनाम नेहा 2021-2। सुप्रीम कोर्ट केसेस 324 2020। सबसे महत्वपूर्ण गाइडलाइंस केस। हिंदू मैरिज एक्ट 24 में ज़्यादा राशि मिल सकती है। CrPC 125 में कम। एक ही समय के लिए दोहरा भरण पोषण नहीं ले सकते। मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम 1985-2। सुप्रीम कोर्ट 556 1985। CrPC 125 सभी धर्मों पर लागू। मुस्लिम महिलाओं के लिए भी। वैयक्तिक कानून से ऊपर भुवन मोहन सिंह बनाम मीरा 2015। 7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 799 2015। CrPC 125 की प्रक्रिया बहुत तेज होती है। हिंदू मैरिज एक्ट 24 में ज़्यादा जांच पड़ताल होती है। सावित्री पांडे बनाम प्रेमचंद्र पांडे 2002 दोनों जगह दावा कर सकते हैं, लेकिन एक ही अवधि के लिए 2 बार पैसे नहीं ले सकते। एडजस्ट करना पड़ेगा। अतिरिक्त महत्वपूर्ण बातें।
दोनों जगह एक साथ दावा चल सकता है, लेकिन एक ही महीने का दोहरा भरण पोषण नहीं मिलेगा। राजनेश बनाम नेहा केस के अनुसार BNSS 2023 में धारा 144 बिल्कुल पुरानी CRPC 125 जैसी ही है, कोई बड़ा बदलाव नहीं। हिंदू मैरिज एक्ट 24 की वसूली सिविल तरीके से CRPC 125 ऑफ BNSS 144 में जेल भी हो सकती है अगर पैसे न दिए। Difference between Hindu Marriage Act Section 24 and CrPC Section 125 BNSS Section 144. Accurate meaning. What is the difference between Section 24 of the Hindu Marriage Act 1955 Hindu Marriage Act and Section 125 of CrPC old law or its new equivalent Section 144 of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 BNSS की डिफरेंसेस। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट CrPC सेक्शन 125 नाउ BNSS सेक्शन 144। पॉइंट ऑफ डिफरेंस एप्लीकेबल लॉ। Hindu Marriage Act 1955 personal law only for Hindus or in some cases under Special Marriage Act. Criminal Procedure Code BNSS secular law applies to all religions in India. Who can claim? Only spouse, husband or wife in a pending matrimonial case, divorce, judicial separation, restitution of conjugal rights, etc. Wife, minor child, legitimate or illegitimate, major child who is physically mentally disabled, and parents, father or mother, who are unable to maintain themselves. Purpose: interim maintenance and litigation expenses during the pendency of the main matrimonial petition. Permanent maintenance to prevent destitution can be claimed even if no matrimonial case is pending. Nature: civil in nature, interim pendency light. Criminal in nature, though remedy is civil, can be monthly or permanent. When it can be filed? Only when a main petition under Hindu Marriage Act, divorce, etc. is already filed or filed along with it independently. No need for any divorce or other case. Quantum amount. Generally, higher court considers status and income of both parties, lifestyle, etc. Reasonable amount to prevent vagrancy, usually lower than Hindu Marriage Act Section 24. Enforcement: executed as civil decree, attachment of property, etc. Faster recovery can lead to warrant imprisonment up to 1 month if default. Interim maintenance possible. Yes, this section itself is only for interim maintenance. Yes, magistrate can grant interim maintenance introduced in 2001 amendment continued in BNSS. Can husband claim from wife? Yes, if he has no independent income. No, only wife, children, parents can claim. Husband, father cannot claim from wife. Time limit: must be filed during pendency of the main case. No time limit, can be filed anytime if neglect or refusal continues. Forum: court, family court, district court handling the matrimonial case. Judicial: magistrate, first class criminal court. Simple summary in one line each. Hindu Marriage Act Section 24 interim maintenance plus litigation costs only for spouse in a pendency in Hindu divorce marriage case. CrPC 125 BNSS 144 general maintenance for wife, children and parents of any religion to prevent starvation, destitution even without any divorce case. Key Supreme Court judgments on the
Difference between Hindu Marriage Act Section 24 and CrPC Section 125, now BNSS Section 144. The Supreme Court of India has, through various landmark judgments, clarified the distinctions between Section 24 of the Hindu Marriage Act 1955 Hindu Marriage Act, which provides for interim pendency light maintenance and litigation expenses during ongoing matrimonial proceedings, and Section 125 of the Code of Criminal Procedure 1973 CrPC, replaced by Section 144 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 BNSS, a secular provision for permanent maintenance to prevent destitution. These rulings emphasize that Hindu Marriage Act Section 24 is civil, matrimonial, specific, and interim in nature, while CrPC 125 BNSS 144 is criminal in procedure, broader in scope, and aimed at social welfare. A claimant can pursue both remedies but cannot claim double benefits for the same period. Below is a curated list of key Supreme Court judgments highlighting these differences. I have focused on rulings that directly or indirectly address the interplay, applicability, and non-overlapping enforcement. Each includes a brief summary of the holding relevant to the distinction, case name and citation year. Key holding on difference: Captain Ramesh Chandar Kaushal versus Veena Kaushal, AIR 1978, Supreme Court 1807, 1978. Distinguished Hindu Marriage Act Section 24 as an interim order for matrimonial proceedings, considering both spouses' incomes and needs during pendency, not a final determination like under Maintenance Act. Emphasized it applies only during active cases under Hindu Marriage Act, unlike CrPC 125's independent, ongoing enforcement to prevent vagrancy. Bhagwan Dutt versus Kamla Devi 1975 2, Supreme Court Cases 386, 1975, ruled that under CrPC 125, a wife's earning capacity doesn't automatically bar maintenance if she is unable to sustain herself adequately. Contrasted with Hindu Marriage Act 24, where courts must weigh lifestyle and interim needs more flexibly in family courts. Chaturbhuj versus Sitabai 2008 2, Supreme Court Cases 316, 2008, clarified CrPC 125's purpose as preventing destitution for all religions secular, applicable independently without a pending matrimonial suit, distinguished from Hindu Marriage Act 24's requirement of an ongoing Hindu Marriage Act petition and its civil interim focus. Anu Kaul versus Raju Kaul Civil Appeal numbers 1789 to 1790 of 2009 held that a working wife is ineligible for personal maintenance under both Hindu Marriage Act 24 and CrPC 125. Only child support is grantable under CrPC 125, highlighted Hindu Marriage Act 24's gender neutral but pendente light nature versus CrPC 125's welfare oriented non-gender neutral scope, wives, children only. Bhuvan Mohan Singh versus Mira 2015 7, Supreme Court Cases 799, 2015. Stressed CrPC 125 summary: expeditious procedure for quick relief, differing from Hindu Marriage Act 24's detailed civil inquiry in family courts, ruled no time bar for CrPC 125 claims, unlike Hindu Marriage Act 24's tie to case pendency. Rajneesh versus Neha
2021 2. Supreme Court Cases 324 2020 provided guidelines for maintenance quantum. Hindu Marriage Act 24 allows higher amounts based on status lifestyle interim, while CrPC 125 focuses on reasonable needs to avoid starvation, often lower. Prohibited double dipping. One remedy must be chosen for enforcement. Overlaps with BNSS 144's unchanged principles. Muhammad Ahmad Khan vs Shah Bano Begum 1985-2. Supreme Court Cases 556 1985 affirm CrPC 125 secular override over personal laws, that is for Muslim women post idda, applicable without matrimonial pendency, distinguished from Hindu Marriage Act 24's Hindu specific interim matrimonial relief, led to the Muslim Women Act 1986 but upheld CrPC's primacy. Additional insights: overlap and choice. In Savitri Pandey vs Prem Chandra Pandey 2002 2. Supreme Court Cases 73. The court allowed parallel proceedings but mandated adjustment to avoid double maintenance, reinforcing Hindu Marriage Act 24's interim role versus CrPC 125's finality. Post BNSS transition. No major Supreme Court judgments post 2023 alter these distinctions, as BNSS Section 144 mirrors CrPC 125 verbatim. Recent affirmations, for example, in 2025 public interest litigation dismissal on gender neutrality, maintain the status quo. Enforcement difference. Hindu Marriage Act 24 orders follow civil execution CPC, while CrPC 125 BNSS 144 allows criminal sanctions like imprisonment for defaults up to 1 month per unpaid installment. These judgments underscore the complementary 8 distinct roles. Hindu Marriage Act 24 for swift matrimonial support, CrPC 125, BNSS 144 for broader destitution prevention. For full text, refer to official Supreme Court resources like sci.gov.in. sci.gov.in